Dear students, good morning. Today we will see the topic conservation of natural vegetation and wildlife of chapter number 2. So, here how can we conserve or protect our natural vegetation and wildlife related this in this video we will see. So, forests are our wealth. Plants give shelter to the animals and together they maintain ecosystem. So forests are very much essential, very much vital source of for us. How can we say that they are very much essentials? So plants give us shelter, not only us but to the animals, and animal and that plants maintain द इकोसिस्टम. मतलब फॉरेस्ट जो है वो हमारा एक कीमती रिसोर्स है जिसको हम बोलते हैं संपत्ति है. वेल्थ मतलब संपत्ति है. तो प्लांट्स जो है वो प्राणियों को क्या देती, छाया देती है. और प्राणी और ये प्लांट्स जो है, एनिमल और प्लांट्स जो है वो दोनों मिलके हमारी जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. So here we can say that the change in the climates and also the human interferences, and these are the main factors for the loss of natural habitats of plants and animals. तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्लाइमेट में जो बदलाव आता है और मनुष्य जो है उसकी जो दखल अंदाजी जो है, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जो कुदरती आवास है, ठीक है, उसको ये बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं. मैनी स्पेसीज हैव बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड and some are on the verge of extinction. So, due to the climate change, human interference, natural habitats of plants and animals are on the verge of loss, and because of that, many species of the plants as well as animals are on the verge of extinction. तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है उसकी वजह से कई ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स की हो, वो आज खतरे की निशानी पे है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि आज वो देखे ही जाते नहीं हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. So which are the factors which are responsible for the extinction of the resources? Which resources? Plants and animals, wildlife and natural vegetation. So which are the factors? So here the factors are mentioned: the deforestation, soil erosion, construction activity, forest fire, tsunami, landslide. These are the major, we can say, human or natural factors which are responsible for the process of extinction of natural vegetation and wildlife. तो डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है, फॉरेस्ट फायर जो है, या सुनामी है, लैंडस्लाइड है, ऐसे कई सारे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो एक्सटिंक्शन मतलब खतरे की निशानी वाली जो प्रोसेस है, या जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो आज खतरे की घंटी पे है. वन ऑफ द मेजर कंसर्न is poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. So which is the one of the major concerns is the poaching. Poaching means killing or hunting. So the hunters are hunting or kill many species, for example many
uh, plants. For example, we can talk about the sandalwood, or if in animal we talk about tiger, lion, elephants. So they are hunting them, they are cutting the trees for their benefits, and because of that, these particular species are on the verge of extinction. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भाई कुछ ऐसी प्रजाति है जो आज खतरे की निशानी पर है। उसके पीछे का मेन कारण जो है कि जो आदमी जो है, मनुष्य जो है, इसका शिकार करते हैं, कई प्राणियों का शिकार करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो या तो वो कई ऐसी वनस्पति है जिसका क्या बोल सकते हैं कि इलीगल उसको कट करते हैं और बाज़ारों में बड़े भाव से बेचते हैं। वो लोग अपने सोते कई सारे कायदे कानून होने के बाद वो कायदे का उल्लंघन करते हैं। The animals are poached for the collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as the feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, and peacock. This can be conserved by increasing awareness. So, which animals are poached? Hunting. So many animals are hunting or killed for the trade of hides. Hides means leather, their skins, their nails, their teeth, horns, as well as their feathers. Or in international market, they are or in international market they are dealing with very high rate. They are selling these items in a high rate, and for that they kill the animals. And some of these animals means which animals are killed for the business, for the nails, for their skins, for their teeth. So लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनका शिकार उनकी त्वचा या उनकी नेल, जिसको हम बोलते हैं नख, जिसको बोलते हैं नाखून, उनके दांत, उसके फीदर्स जो है, उसके फर जो है, ठीक है, उसके लिए उसका शिकार किया जाता है। तो ये सारे एनिमल्स जो है उसको हम कंजर्वेशन प्रोग्राम के थ्रू बचा सकते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो है और कंजर्वेशन प्रोग्राम थ्रू या लोगों के अंदर अवेयरनेस लाके लोगों को समझा बुझाकर हम ऐसे एनिमल्स जो है या ऐसे जो प्लांट्स है जो कि खतरे की निशानी पर, ये सारे जो है हम बचा सकते हैं। कैसे? तो लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम करके, लोगों को समझा बुझा के कि भाई अगले नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको ये सारी चीज़ें दिखने को नहीं मिलेगी। अगर आप आज शिकार करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अगले जन्म या नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ जो है उनको समझानी है। तो क्या होगा कि भाई ऐसी जो चीज़ें हो रही है वो कम होती रहेगी। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स are made to protect our natural vegetation and wildlife. So, protect our natural vegetation and wildlife. National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made. Conservation of creeks, lakes, and wetlands is necessary to save precious resources from the depletion. So, to save the precious resources of depletion, conservation of creeks, lakes, and wetlands are very much necessary. And there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. If some species, some trees, some plants, some natural vegetations are disturbed, then the balance in ecosystem will not be there. If these species means these animals, about
which we talked earlier, that lion, rhinoceros, elephant, they are killed for the business. Some trees they are cut for their business. Then the ecosystem, our environmental balance is will be not there. Our environmental balance ecosystem is going to be disturbed. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर हमें एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए, तो कुछ ऐसे स्पेसीज जो है जिनका हमें क्या करना है, बचाव करना है। कुछ ऐसी स्पेसीज है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए नहीं, मतलब उनका शिकार नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसको हमें काटने चाहिए नहीं। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. The human activities, many activities, for example, farming, constructing buildings, dams, deforestation. Understood? So these kind of activities are disturbing the habitats of the many species. Due to the indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. So due to the indiscriminate killings, illegal killings of several birds and animals, they become extinct or they are on the verge of extinction or they are endangered animals. So ऐसे कई तो क्या बोलते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो प्राणियों या पक्षियों की किलिंग हो रही है या कुछ ट्रीज़ जो है वो काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसे प्राणी हैं, बर्ड है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आज खतरे की निशानी पर है या तो ख़त्म ही हो गए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. So, to make aware all the people about our wildlife and natural vegetation, and to make them aware about the importance of nature, how they are very much important for the ecosystem, how they are very much important for the environmental balance. So let them know that why they are important. So for that, some awareness programs to be held in the regional level or community level. One Mahotsav program to be held or at the regional or community level, so we can grow more and more trees. तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम जो है हमें क्या करने चाहिए, रीजनल या मतलब लोकल लेवल या कम्युनिटी लेवल पे अरेंज करने चाहिए, जिससे लोगों को इसका महत्व समझ में आए कि भाई वाइल्ड लाइफ जो है या तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट nature camps so they appreciate the habitat of varied species. So for the school children, you have to arrange picnic of the sanctuaries or to watch the bird, or you have to arrange the picnic to visit nature camp, or you have to arrange some nature camps so they can appreciate the varied species of the nature. They can understand the importance of our natural vegetation, our environment. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. Many countries, in that India is also there. So all the countries of the world have passed many laws against the trade or as well as the killing of these many birds and animals. For example, if we talk about India, so there is a prohibition or there is an act for
one act was passed or is passed for the killing or hunting of the tiger, lion, elephant. Understood? So, if you found guilty or if you be caught red-handed by of to kill or hunt the tiger or any animal, then you will be sent to the prison or you will have to pay fine or many strict uh, punishments will be there. In India, killing lions, tigers, deer, great Indian bustards, and peacocks is illegal. An international convention (CITES) has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. सो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीट्स के नाम से एस्टैब्लिश किया गया जो क्या करता है कि जो इलीगली एनिमल्स और बर्ड्स को मार के उसका जो क्या करता है इलीगल व्यापार करता है उसके ऊपर देख रेख रखता है और वो उनके ऊपर कायदे कानून बनाता है, मतलब ये क्या कोई प्रोहिबिशन एक्ट वहाँ ये लागू करता है. Conservation of plants and animals is an ethnic duty of every citizen. So, conservation of plants and animals is a duty of every citizen of India, not only for me, not only for you, but it is the duty of all the Indian citizens. So, we have to take care of natural vegetation and wildlife. So, I will send you a copy of exercise of this chapter. You have to note down in your notebook. Thank you. Have a nice day.